So today we are performing an activity, bete, to show that oxygen or air is necessary for the combustion of the substance. And this activity again you will be sending me, and as in the activity we need material required or things required that you will write yourself or explain you. Then procedure or the method you have used. Then what are your observation? Then what is your conclusion? Now last one is what is your conclusion? So first of all, yes, Mansvi, wait. Let me start first. Okay. Now this is visible to everyone. Everyone there, bete. Okay. Okay. So the things required. Things required, you can see here is a beaker. You can write it. Here is a candle. Okay. Here is a, we can say a mastic. In place of beaker, you can take glass tumbler also. And in this, below the this candle, you will be definitely placing a plate that आपकी जो wax है वो नीचे ना करे, ठीक है बेटे? So you need a candle, you need a beaker or a glass tumbler, and you need a mastic. So what is the procedure we are doing? So first what I am doing, light a candle on a plate and cover the burning candle with the glass. I have lighting the candle. Let me switch off the, wait. Okay. So the first thing we have to do is light a candle on a plate. You will be having a plate. I have lighted up the candle and you can see that it is completely burning. Now I am covering this candle. I am covering this candle with a glass tumbler, or I can say with a beaker. So I have covered it. I have covered it. Let us see what will be going to happen. Still it is burning and burning and burning. Now you can see the candle is extinguished. So I am removing this burner and this beaker and showing you that is candle get extinguished. So what we observe? You observe that candle stop burning after some time. So it was burning and after some time we have observed that candle stop burning.
कैंडल तब तक बर्न करती रही है जब तक उसको इस ग्लास टम्बलर में द ऑक्सीजन वाज अवेलेबल, एंड एज सुन एज देयर इज नो a fresh supply of oxygen is there and the fresh supply of fresh air was cut off, then the candle stop burning or it get extinguished. So what is the conclusion you are drawing from the experiment? That we know we must have oxygen that is supporter of combustion for the candle to be burned. Okay, bete? So this is your activity. In the activity, we have seen that you need a supporter of combustion, that is oxygen for the burning. Any doubt now you can ask. Any doubt? Okay. So what we have taken again? We have taken a candle. Okay, we have taken a candle, we have taken a matchstick. Then we have burned it. We should place it in the plate and then cover with a beaker or a glass tumbler. Then what will we observe? That after some time the candle will get extinguished because there is no supporter of combustion, that is oxygen. After some time it will get extinguished. Okay, bete? Now let us move towards our topic. The topic was we are doing the three things necessary for the combustion, which are presence of combustible substance, presence of supporter of combustion, and attainment of ignition temperature. And we know we have done bete, the material which have low ignition temperature will burn quickly because it catches fire. I've given you the example, the person who is very much angry in your class. So it has low ignition temperature. The person who is having control on the anger and wo fatta nahi hai, that is high ignition temperature. So every substance have different ignition temperature. Now next is bete firefighting. Next topic is our fire fighting. जब भी बेटे whenever कहीं भी फायर कैच करती है तो हम हमेशा फायर ब्रिगेड्स में बुलाते हैं. फायर फाइटिंग का मतलब है कि इस फायर को हम कंट्रोल कर सकते हैं और एक्सटिंग्विश कर सकें अनवांटेड फायर. ठीक है, जब भी कहीं पे भी फायर लगती है तो हम यही करते हैं, वी शुड कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विश द फायर. Why we should control and extinguish the fire? What are the basic principles to control the fire बेटे? क्या क्यों हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? देखो, हमें तीन चीजें चाहिए थी जो कंबशन को सपोर्ट करता था. क्या क्या तीन चीजें थी? वन वाज सपोर्टर ऑफ कंबशन, वन इज अटेनमेंट ऑफ द इग्निशन टेम्परेचर, one is the material which is getting combust, that is combustible substance. अब किसी को आग लग रही है तो उसको तो हम रिमूव करने नहीं वाले, बिल्डिंग को वहां से नहीं हटाएंगे. तो हम क्या कर सकते हैं? हम या तो इग्निशन टेम्परेचर बढ़ा दें या सपोर्टर ऑफ कंबशन को, दैट इज ऑक्सीजन, उसको कट ऑफ कर दें. यस कृतिका? When we can use fire extinguishers. Yes, to cut off the oxygen supply. So what are the basic, write down, firefighting operation works on these principles. The first principle, as I suggest you,
that bring down the temperature of the burning substance. Bring down the temperature of burning substance below the ignition temperature. Below the ignition temperature. So we know that the burning substance catches fire below the ignition temperature. Okay? When the ignition temperature is attained. और अगर आप below the ignition temperature ले जाओगे और ignition temperature attain ही नहीं होगा तो आपका जो substance है वो fire catch नहीं करेगा. Second thing we can do, cutting off the air supply to the burning substance. So you can cut off the air supply to the burning substance. In the either way, we need three things to undergo combustion. One is supporter of combustion. Second is attainment of ignition temperature. Third is combustible substance. Now we can't remove a combustible substance. We can't remove the building or room which is burning. We can just bring down the ignition temperature. ठीक टेम्परेचर ठंडा कर देंगे, पानी डाल लेंगे, जो भी है जैसे मर्जी है, डिपेंडिंग हमारी फायर किस तरह की है. If there is electrical fire is because of this electrical shock or electrical circuit जो lose हो गया, we can't use water over there because water is a good conductor of electricity. ठीक, तो उसके लिए और कुछ यूज करेंगे और हम एयर की सप्लाई रोक देंगे. जैसे हम सैंड डालते हैं किसी चीज के ऊपर, तो सैंड भी हैवियर होती है, इट विल कवर दैट मटेरियल एंड एयर सप्लाई विल बी लेसन और लूजन अप. So your the building or the things which is burning up can't burn. ठीक, if you will remove these two things. Now the next is what things we can use as to extinguish the fire. So we can use water as a fire extinguisher. Three things which can use to extinguish the fire. First is bete water. You can use water as an extinguisher. You can use carbon dioxide as an extinguisher. And you can use foam type fire extinguisher. So three types you can use. One is water as a fire extinguisher and other one is carbon dioxide and third one is fire foam type. Yes. मैम बस फायर फाइटिंग वाला पॉइंट रिपीट कर दोगे? मेरा नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है. क्या रिपीट कर दूं बेटे? मैम फायर फाइटिंग वाला, वो जो फायर फाइटिंग वाला लिखवा रहे थे. फायर फाइटिंग का मतलब ये होता है बेटे टू कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विश द फायर. अब फायर को कंट्रोल करने के लिए, एक्सटिंग्विश करने के लिए जब ऑपरेशन कैरी आउट किया जाता है तो बेसिकली हम दो चीजें कर सकते हैं. ठीक, तीन चीजें चाहिए हमें फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए. एक तो आपके पास कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, पहली चीज. दूसरी चीज, हमारे वो कंबस्टिबल सब्सटेंस इग्निशन टेम्परेचर अटेन कर ले. थर्ड थिंग,
जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसके पास सपोर्टर ऑफ कंबस्शन हो। तो पहली चीज तो हम रिमूव नहीं कर सकते, वी कांट रिमूव कंबस्टिबल सब्सटेंस फ्रॉम द प्लेस वेयर द फायर इज देयर। So what we can do, we can bring the temperature below the ignition temperature, yeah, we can cut off the supply of the oxygen or the supporter of the combustion, that the combustible substance can't be burned off. Okay, Manasvi? Manasvi. Okay, so two things you can do. जो एक चीज नहीं कर सकते, we can't remove one thing, that is combustible substance. Other two things you can remove easily, and to remove other two things we have different type of extinguishers depending the things are there are. So again, yes, Rhythm, but you are having doubt? मैम मुझे एक पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग सब्सटेंस बिलो द इग्निशन टेम्परेचर। Your voice is not so much audible, but it is right in the chat box. ओके मैम। I'll give you your answer, just write in the chat box. So yeah. Okay, so what first is bete water as a fire extinguisher. अब हमें पता है, just we will discuss it and you will write your points yourself. अगर हमारे कहीं आग लग जाती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम फायर ब्रिगेड कॉल करते हैं। फायर ब्रिगेड क्या करते हैं, वाटर जब वो स्प्रिंकल करेंगे या स्प्रे करेंगे तो इग्निशन जो टेम्परेचर है ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस वो बिलो कम हो जाएगा। आप खुद भी देखो, अगर आप पेपर बर्न करते हो बेटे, पेपर जब ड्राई होता है देन इट विल बर्न इजीली। जब आप पेपर को गीला कर दोगे तो वो बर्न इजीली नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है रिक्वायर्ड वो अटेन नहीं कर पाएगा, टेम्परेचर कम चला गया, बिलो बहुत ठंडा हो गया वो चीज। ठीक है, जब आप वाटर किसी चीज पे डालते हो, when water is thrown on the fire, it cools the combustible substance below its ignition temperature and prevent the fire from spreading. ठीक है बेटे, when you will spray the water, it will bring the temperature of the combustible substance. For example, if your combustible substance needs 50 degree and if you have thrown the water, अब वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब उसने बर्न 50 डिग्री पे ही करना है। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री पे चला गया तो वो बर्न नहीं करेगा। जब आप वाटर डालते हो तो टेम्परेचर क्या हो जाता है बेटे, लोअर, टेम्परेचर कम हो जाता है। व्हेन द टेम्परेचर कम हो जाएगा तो आपका सब्सटेंस बर्न नहीं करेगा। अब आग लगने के लिए, वुड को आग लगने के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। अब लकड़ियों पे हम पानी डाल देंगे तो वो टेम्परेचर अटेन नहीं हो पाएगा। कौन सा, इग्निशन टेम्परेचर। तो जो हमने वाटर स्प्रे किया, उन्होंने जो डाला, उससे क्या हुआ, द टेम्परेचर हैज undergone or get below the ignition temperature. ठीक, now it will not burn. Okay, so this water can be used as extinguisher. Now where water can't be used, water cannot be used to extinguisher fires in electrical wiring caused by electrical shortage circuit. ठीक, अगर आपकी आग लगी हो इलेक्ट्रिकल शॉर्टेज के कारण, तब हो तो हम क्यों नहीं यूज कर सकते वाटर। आई हैव टोल्ड यू बिफोर आल्सो, क्योंकि बेटे वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड व्हाई वाटर कांट बी यूज्ड टू extinguish fire in electrical wiring caused by the electrical short circuit. Write down why water can't be used to extinguish
fires in electrical wiring caused by electrical short circuit. So you know that water is a good conductor of electricity. And if you pour water on the building burning due to the electrical short circuit, what will happen? It can cause shock to you or the person who is throwing the water. As it is very good, हमने कहा है कि distilled water is not a good conductor of electricity. But जो ये water throw करते, it is not a distilled water, but it is a simple water. When the simple water is thrown over it, it will cause electric shock to the person who is throwing the water. So you can't use the water as an extinguisher when there is the fire due to electric short. Okay, when there is electrical short circuit and then you will use the water, it will not extinguish the fire, it will definitely extinguish the person because it will get the shock and even the person can be killed. Now next is why water can't be used to put off the fire caused by burning oils. ठीक, one, जब इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है तब क्यों नहीं? And other one is why water can't be used when the fire is due to oil. When the fire is due to the oil or petrol. अब घर पे ना करके देखना बेटे, you will take सरसों oil and you will take water. इसको mix करना. You will get 2 layers. Water नीचे चला जाएगा और oil ऊपर आ जाएगा. Water नीचे चला जाएगा. If I will place in a beaker water and oil, I will see that oil is here and water is here. When oil will form the first layer, see, when the oil will first layer, water can't extinguish the oil, the fire due to oil, because water being heavier settle down at the bottom and oil float over this water and it will continue to burn. Okay, bete? So we can't use water as a extinguisher when there is fire due to petrol or an oil, because oil is the lighter one and water is the denser one. So it will not float on the water, rather being heavier, it will settle down at the bottom. When it will settle down at the bottom, the oil will keep on burning like it was burning. So you can't use water as extinguisher when there is electric short circuit and when there is burning due to oil. Got the point? So this was your first extinguisher. Now second is bete carbon dioxide. And you must have seen the carbon dioxide extinguisher. The cylinders are there in our schools also, wherever you go to the malls and all stuff. So there is carbon dioxide as a fire extinguisher. Okay, and these extinguisher can be even used in oil, petrol like things, because carbon dioxide is heavier than oxygen and surround the burning combustible substance like a blanket. ठीक? So you can write down carbon dioxide can be used because it is heavier than oxygen and surrounds the combustible substance like a blanket. When it will surround a combustible substance like a blanket,
जैसे हम भी ब्लैंकेट या क्विल्ट में होते हैं, हमें ठंड नहीं लगती, तो वैसे ही कंबस्टिबल सब्सटेंस के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। ठीक, दिस कट ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द बर्निंग कंबस्टिबल सब्सटेंस and oxygen and bring down the temperature of the fuel. अगर हम क्विल्ट लेके ओढ़ के सो जाएं तो हवा के बीच और हमारे बीच में एक लेयर आ जाएगी। अब लेयर आने से क्या होगा, लेयर आने से ऑक्सीजन हमारे तक नहीं पहुंचेगी। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो ये धीरे 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 ठंडा होता जाएगा, एक लेयर बन गई है, तो इट विल बिकम कूलर and ignition temperature will not be attained. As such, the fire will be extinguished. Okay. Next is beta foam type fire extinguisher. So for the foam type, I'll show you the picture of the first foam type and then you will understand. So you can see beta all of you, this is a foam type fire extinguisher. Yes, you can see. Okay then. So beta, many types of the foam type are there. Here they have taken two solution as you see. One is sulfuric acid. One is sulfuric acid can and one is sodium carbonate can. ठीक है? So this is a metallic cylindrical. See, it is a form of metal and is a cylindrical shape. And you can see here there is a nozzle tube. This is a nozzle tube over it. ठीक है बेटे? ये nozzle tube है. This is a handle to hold it. ये सेफ्टी पिन है, इसको रिमूव करेंगे, प्रेशर रिलीज होगा। ठीक, देयर इज अ नोब। अब इस सिलेंडर में आपको सोडियम कार्बोनेट नजर आ रहा है। यू कैन फिल द सिलेंडर विद सोडियम बाइकार्बोनेट आल्सो। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट? बोथ आर द सॉल्ट ऑफ द सोडियम। सो इट हैज sodium this is sodium bicarbonate and this is sodium carbonate. You can take sodium carbonate or sodium bicarbonate. बेटे, one is sodium carbonate or bicarbonate. So in this metallic cylinder, you can write also is filled with a saturated solution of sodium bicarbonate. Here it is carbonate anyway. A glass containing bottle. This bottle, see this bottle is here, which consists of sulfuric acid. In place of sulfuric acid, you can even take aluminium sulfate. ठीक बेटे, in a saturate a glass containing bottle, glass की bottle है जिसमें either you will take sulfuric acid or you can take aluminium sulfate. Both the ways. ठीक, सिलेंडर के अंदर क्या है? सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, और ग्लास की बोतल में क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड और एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक, व्हेन वी स्ट्राइक द नोब ऑफ द एक्सटिंग्विशर अगेंस्ट द हार्ड सरफेस, जब इसकी नोब, ये जो ऊपर सेफ्टी पिन लगी, इसको जोर से हार्ड सरफेस के ऊपर, ये ग्लास बोतल ब्रेक कर जाएगी। जब ये ग्लास बोतल ब्रेक करेगी बेटे, इस केस में सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के अंदर जाएगा। अब ये जो दोनों रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे प्रोड्यूस होती है जैसे कि फोम है, झाग है। ठीक है, गॉट द पॉइंट? देखो, आई विल राइट द रिएक्शन फॉर यू।
This is sulfuric acid. When it is react with sodium carbonate, so you will get a salt NaCl, water and carbon dioxide. ये किसमें है? आपके मेटेलिक सिलेंडर के बीच में ही है। और ये किसमें है बेटे? ग्लास ट्यूब में है। अब जब आप अपना ये एक्सटिंग्विशर हार्ड सरफेस के ऊपर लगाते हो तो ये वाली जो बॉटल है वो टूट जाती है और ये इसके अंदर आ जाता है, और इन दोनों की रिएक्शन से आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। यू विल नॉट डू द रिएक्शन, दिस इज ओनली टू एक्सप्लेन यू।